Good morning, all of you. I hope audio and video both are working fine. Please confirm. Good morning, Nosaba, Parveen. Good morning, Rajendra. Am I audible to everyone? Both audio and video both are fine. Okay, thank you. So we are celebrating the 20 million subscriber in StudyIQ IAS channel. So we are thankful to everyone for this great achievement. Okay, so let's start today's session. So the national international news: artificial rain, urbanization, remittances, Maoist resettlement, FCRA, primary agricultural credit societies. Okay, these are the national international news we'll cover in this session. Let's start. Artificial rain. Delhi government signed an MOU with IIT Kanpur to conduct. Thank you, Nosaba Parveen. Conduct cloud seeding trials as an emergency measure against rising air pollution. Cloud seeding trials ବର୍ତ୍ତମାନ Delhi government is trying to do. The reason କ'ଣ? The reason ହେଉଛି air pollution को control କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି air pollution ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ particulate matter ଅଛି it keeps flowing in the atmosphere. Okay, and since winter is ahead, winter is जेहेतु high pressure ଆମର atmosphere ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ तो पार्टिकुलेट मैटर गुड़िक आपंकर आटमोस्फियर रुहे सी फ्लो करे नहीं और जदि आप देखिए जोटा कोस्टल बेल्ट अच्छी विंड स्पीड या जो आपंकर सी ब्रीज पाई से गुड़िक काफ़ी फास्टर मूव करे विंड फल बट जेहेतु एवं जदि लो प्रेशर क्रिएट है तो हुए एंड अनदर फैक्टर इज जदि रेनफॉल है तेरे पार्टिकुलेट मैटर गुड़िक तलू आसिक सरफेस रे पड़े एंड सिंपली आपंकर क्लीन एयर आपन को देखा मिले बट ड्यू टू दिस लैक ऑफ रेन नंबर 1 नंबर 2 दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन इज ए लैंडलॉक्ड रीजन से कौन सी कोस्टल रीजन ना तो से पार्टिकुलेट मैटर इज कीप पोल्यूटिंग दिस अर्थ तेणु से क्लाउड सीडिंग जोटा कि आर्टिफिशियल रेन बोली आम कहे मेथड देखो एयरक्राफ्ट विल स्प्रे सिल्वर आयोडाइड बेले बेले क्वेश्चन आसे आर्टिफिशियल रे रे को कंपोनेंट को यूज करा जाए आर्टिफिशियल रेन रे को कंपोनेंट को यूज करा जाए दैट इज सिल्वर आयोडाइड beneath cloud cover induces condensation and artificial rainfall जदि precipitation पूरा प्रोसेस आपण देखिए प्रथम होची evaporation then the condensation at the with the cloud and condensation hela pore water molecule गुडी को थोड़े heavy हे जाए it comes down so that is the process of what precipitation तेणु ये सिल्वर आयोडाइड जोटा अच्छी एक्जाक्टली सही काम करे इफ देयर इज ए क्लाउड से क्लाउड को कंडेन्स करिबारे ही सिल्वर आयोडाइड हेल्प करे और से क्लाउड कंडेन्स हला परे सो जो आपनकर वाटर मॉलिक्यूल्स अच्छी वाटर मॉलिक्यूल्स कम्स टू द अर्थ सरफेस एंड दैट लीड्स टू द आर्टिफिशियल रेन ओके गुड मॉर्निंग दीप्ति ऑपरेशन 5 planned trials depending on the weather conditions so approval 13 agencies obviously the aviation defense home environment everyone will give the clean green signal and then only Delhi government can proceed now what is this cloud seeding a weather modification technique to enhance precipitation ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ weather modification technique ଆମେ यूज करूचे that is known as the artificial rain केमिकल यूज कौन देखो सिल्वर आयोडाइड की यूज करा जाउची पोटासियम आयोडाइड यूज करा जाइए जहाँ आम ड्राए आइस बोली भी कहे सिल्वर आयोडाइड पोटासियम आयोडाइड एंड ड्राए आइस भी ताको कहा जाए इट वर्क्स ओनली इफ सफिशिएंट क्लाउड कवर एक्जिस्ट यदि क्लाउड नथिबो तेबे आपण कहा को कंडेन्स करेंगे तो क्लाउड इज द प्रायोरिटी क्लाउड इज वुड बी द प्राइम सब्सटेंसेस विच this technique would make it condense and ताको आपण रेनफॉल कन्वर्ट करि परिबे
So pre-existing clouds are required. Okay. Arguments in favor ଦେଖନ୍ତୁ may provide temporary relief from severe smog episodes. ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସିଜନ୍ ଆସୁଛି। ଏ ସ୍ମଗ୍ର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ? ସ୍ମୋକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫଗ୍, ସ୍ମୋକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫଗ୍, ଏଟାକୁ ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ମଗ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେବେ ସ୍ମୋକ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଭେହିକୁଲାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ସ୍ମୋକ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏମିସନ୍, ସ୍ମୋକ୍ ହେଉଛି ଯେମିତି ଏବେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସୁଛି କ୍ରାକର୍ସ, ଫାୟାର କ୍ରାକର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୋକ୍ ଆସିବ, ଧୂଆଁ ଆସିବ, ଏବଂ ଫଗ୍ कंडीशन सहित मिसिकी से स्मॉग हुए एवं दैट कीप्स ऑन द सरफेस और द एटमोस्फियर रे रुहे, अर्थ रे सरफेस रे रुहे। तो ये सीवियर स्मॉग एपिसोड को अवॉइड करबा पई आमे आर्टिफिशियल रेन करूछु, फल जो पार्टिकुलेट मैटर गुड़िक अच्छी दैट विल फॉल ऑन द अर्थ सरफेस एवं से गुड़िक धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाए। सो कैन रिड्यूस द पार्टिकुलेट मैटर दैट इज PM2.5 एंड PM10 दैट इज व्हाट यू कॉल द particulate matter, demonstrates government commitment to tackle pollution with innovative methods. And ये जिनसा नुआ नुहे जदि अपन देखिए cloud seeding is going to be first time in Delhi, that is true, but not first time used by the any such government. आगुरु कर्नाटक भी होची, महाराष्ट्र जो big cities अच्छे and they are polluted. In fact it has been done in the Kolkata as well. जो बिग सिटीज गुड़िक अच्छी एयर पोल्यूशन काफ़ी हाई, से जगह आम गुड़िक ये टेक्निक को यूज करुचे। ओके। क्रिटिसिजम, एक्सपेंसिव एंड टेम्पररी, इम्पैक्ट्स लास्ट ओनली ए फ्यू डेज। ओके, बहुत कम समय आप यार इम्पैक्ट देखिए, कारण कंटिन्यूसली यू कैन डू दैट बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर। इफेक्टिवनेस अनसर्टन, डिपेंड्स हेविली ऑन द क्लाउड कंडीशन। आपन को कंप्लीटली देखा पड़ो, जमती बहुत समय क्लाउडी वेदर थाए, ओके, बट वर्षा हुए ना, सो देर इज ए पॉसिबिलिटी इफ यू यूज दैट टेक्नोलॉजी और टेक्निक it will lead to rainfall, but it depends again the complete cloud condition. Funds could be better used for long-term pollution control, that is emission reduction, clean fuel, transport reforms, dust management. These are the thing. Okay, so long-term pollution control by ये अपन को use करा जाई पारे, but again this is very expensive in nature. Risk of over reliance on quick fixes instead of systematic solution. ये टेम्पररी सोल्यूशन, बट व्हाट इज द परमानेंट सोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करिबा। आमे आर्टिफिशियल रेनफॉल कहीं चाहूचे बिकॉज ऑफ दिस टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। ओके, वी नीड मोर क्लीन एयर, तो से आमको ओबियसली परमानेंट सोल्यूशन बाहर करने को पड़ो। एंड सिंस विंटर डेज आर अहेड, सो डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज टू कन्वर्ट this controlling pollution into a very structural manner. आम देखा व्हाट आर द स्टेप्स जो गुड़िक सरकार दिल्ली गवर्नमेंट स्पेसिफिकली नौकरी। आप शुणी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द पोल्यूशन गवर्नमेंट स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग दोज, जब इंडस्ट्रीज को टेम्पररी प्रोडक्शन को बंद करवा, इंडस्ट्रीज को बंद करवा। लेट्स से कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैव बीन banned for some days, few days, let's say. Okay, public transportation restrictions kariba. So there are multiple such responses which government reacts when the air pollution starts increasing. Okay, moving to the next, urbanization. ame dekhiba urbanization, basically why Indian urban definition is failing its growing towns. Okay, let's see. urban unit केमती डिफाइन करा जाए, कहा को मैं अर्बन बोली कहबा? स्टैट्यूटरी टाउन notified by the state government with an urban local body, municipal corporation, council and nagar panchayat, notified by the state government द्वारा ही एटा को notify करा जाए। जमती एबे देखिथिबे आपण रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट हैज upgraded the Puri municipal council to municipal corporation. Okay, so one municipal corporation has been added. Earlier we had this 5 municipal corporation, now we have 6. Similarly, there are areas जोटा कि municipal council भावर upgrade करा गला, and there are areas those who are considered as the nagar panchayat or the notified area council. So what are the substances जोटा कि हमें कौन करूचे? ये जो कहा को municipal corporation को upgrade करूचे, कहा को council दूचे and कहा को nagar panchayat दूचे. Census town जो देखिए administratively rural but meeting 3 criteria.
ଯଦି population equivalent to ଆପଣଙ୍କର 5,000 or more than that, that is known as the census town. 75% or more of male main working population in the non-agricultural activities ताकू भी हमें टाउन बोली कंसिडर करिबा. नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कहीं ना ताकू हमें अर्बन बोली कहि परिबा या टाउन बोली कहि परिबा. कारण जदि एटा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे ही जाई थांदा तो ऑब्वियसली वी कांट से आमे देखू रूरल रे ही कंसिडर करि थांते. वी वोंट कंसिडर इट एज ए टाउन और अर्बन एरिया. पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज equal to or more than the 400 persons per square kilometer, then also it is considered as the town. So जो सेंसस टाउन बर्तमान जो 2027 रे जो सेंसस टी आसीबार अछि ओबियसली रूरल पॉपुलेशन को से देखेबो, टाउन रो पॉपुलेशन को भी देखेबो और अर्बन एरिया रो पॉपुलेशन को देखेबो. तो सेटा डिपेंड करूछि काहा ऊपर ई क्राइटेरिया ऊपर. जदि पॉपुलेशन जनसंख्या जदि 5,000 और मोर, मेन वर्किंग male members working population 75% or more in the non-agricultural activities other than the agriculture, that means out hochi population density. Okay, जोटा माने केते स्क्वायर किलोमीटर रे केते लोक रहउछन, सो पर स्क्वायर किलोमीटर 400 persons would be living, then it is known as the population density, right? So on these criteria census town would be classified. एवं 2027 रो जो डेटा कलेक्ट आमर करा जाउची सेंसस पाई ये सेम डेटा को रखा जाइछि. सो हेई थाई पारे वर्तमान सेंसस पर देयर वुड बी मोर नंबर ऑफ टाउन्स हमें देखि परिबा एंड से टाउन्स को हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जोटा हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और जोटा हमें अर्बन लोकल गवर्नेंस होचे ता अंडर रे हमें आनी परिबा. नाउ लिमिटेशंस ऑफ करंट डेफिनेशन कोन देखंतु. बाइनरी क्लासिफिकेशन दैट इज अर्बन और रूरल ये टाइप आम क्लासीफाई करूँ रूरल और अर्बन, बट आम पेरी अर्बन सेमी अर्बन ट्रांजिशनल सेटलमेंट को क्लासीफाई करूँ ना एज पर द सेंसस. सेंसस टाउन देखिए फंक्शन लाइक अर्बन एरियाज बट रिमेन अंडर रूरल गवर्नेंस, लिमिटेड ऑटोनॉमी, पुअर फाइनेंसेस, इनएडिक्वेट प्लानिंग. दैट मीन्स आप देखिए किसी एरिया अच्छी जो गुड़िक ये क्राइटेरिया तो मीट करूँ बट सेठी आज पर्यंत भी आप देखिए से पंचायत ही चली. इनफैक्ट इफ यू सी भुवनेश्वर सिटी रो आखापाख अंचल जते अच्छे यू कैन से इट पेरी अर्बन और सेमी अर्बन, यू कैन से इट एज ए ट्रांजिशनल फेज रे अच्छी, बट से गुडी को आपण देखिबे पंचायत अंडर रे आसुची. ओके, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर रे आसुची. ओके, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस अंडर रे आसुची. तेणु ताको अर्बन रे हमको कंसीडर करिवार अछि. काहेकि आमे डिस्कस करूचे सेटा भी हम कहबी आपनको. 75% male workforce rule outdated, ignores women informal unpaid work. तमाने जो 75% मेल वर्कफोर्स आम ये देखुले यहाँ हूँ ओल्ड क्राइटेरिया एवं ये आउटडेटेड हो गलानी कहीं ना वुमेन वर्कफोर्स भी आसिलानी. वुमेन हैज ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर. एम्प्लॉयमेंट इज मिक्सड, किसी एग्रीकल्चर सोर्सेस ऑफ इनकम आसूची आउ किसी नॉन एग्रीकल्चर भी आसूची. ओके, एंड राइज ऑफ गिग इकोनॉमी एंड सर्विस जॉब जमती आम देखुचे काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो करिछि. जमती आम कहूचे सपोज स्विगी जोमाटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव मान कथा आम कहूचे एंड अदर देन सर्विस जमती अर्बन कंपनी जमती आसिलानी सर्विस प्रोवाइड से करूँ. सो लॉट ऑफ जमती ओला उबेर ये सब जो मैंने ड्राइवर सब अच्छा तो गिग वर्कर्स मानकर भी नंबर्स बढ़ी बढ़ी चली. ओके, नो अंडर काउंटिंग ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफिशियल अर्बन पॉपुलेशन जदि आप देखिए 2011 रे ये हूँ ओनली 31%. अल्टरनेटिव मेथड शो 35 to 57% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन. एग्जांपल जदि आप देखिए वेस्ट बेंगल रो 251 सेंसस टाउन्स 2011 रिमेन्ड रूरल इवन बाय 2011. तेणु ये टाइप जिनस सबुआड़े देखा मिलूँ. 2001 जो 251 सेंसस टाउन थिला सेटा 2011 पर्यंत भी से रूरल एरिया रे रोहतला. 526 न्यू सेंसस टाउन्स एडेड इन 2011 बट नो स्टैट्यूटरी कन्वर्जन गवर्नेंस गैप. दैट मीन्स से पर्यंत भी से रूरल गवर्नेंस रे रोहुची. ओके, अच्छा इम्प्लिकेशंस कौन. अच्छा जदि आप ऑल इंडिया एवरेज देखिए ये जमी 2011 रो सेंसस अनुसार इंडिया रे 31% हूँ आपंकर अर्बन एरिया. जदि आप ओडिशा को कंपेयर करेंगे ना ओडिशा इज फार बिलो ऑफ दिस 2017 एंड 18% अच्छी.
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ apart from this ଏବେ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲା, more areas have been included in under the notified area council, more areas have been included in the ଆପଣଙ୍କର municipal council। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ମୋର୍ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ would increase, urbanization should expand its ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏରିଆଜ୍। ତା ପଛରେ ରିଜନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦ ରିଜନ୍ ଇଜ୍ urbanization or urban areas are considered as the engine of growth। ओके, तेणु जिते अर्बानाइजेशन या अर्बन एरियाज गुड़िक एक्सपैंड हम, देर विल बी मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देर विल बी मोर जमती आपरे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम रो एवेन्यूज क्रिएट हो पार, मोर नंबर ऑफ पीपल विल स्टार्ट लिविंग। सो डेफिनेटली आपंकर जो टार्गेट रोचे इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन, ये सब जिन कौट ना कौटी आपंकर फुलफिल हो पार। रूरल एरिया रे यू कैन नॉट जमती आम कौच इनफैक्ट आम इंटरव्यू जो चली द सेम क्वेश्चन आई वाज आस्किंग टू मेनी सच कैंडिडेट्स कि व्हाई वी नीड अर्बनाइजेशन, व्हाई दिस गवर्नमेंट केम विद दिस न्यू नोटिफिकेशन बाय इंक्लूडिंग certain areas under the notified area council and certain areas would be on the municipal council। Many students were saying, sir, we need urbanization, but we need smart villages, or we first focus on the villages। That is absolutely correct। We need sustainable smart cities, we need to focus on the villages as well। But just remember this thing, if you see the agricultural activities, which is the core agricultural activities of agriculture of the rural area, in fact, say voice टिके low अच्छी, okay, is it fine now? Just let me know, is it fine now? Is it fine now? Okay, so if you see the rural economy, तार मेजर वर्कफोर्स कोठी एंगेज होचन एग्रीकल्चर। बट एग्रीकल्चर रे आपण ओके एग्रीकल्चर रे आपणकर केते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करूची 45%। एंड वी ऑलवेज डू डिस्कस इन एग्रीकल्चर देयर इज ए सरप्लस लेबर फोर्स, जहाँ को आम कौन कौचे, आम कौचे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो जदि अर्बानाइजेशन हम ना, लेबर फोर्स आपणकर रूरल रु अर्बन को आसबे ना, कहीं ना अर्बानाइजेशन हेनी, मोर अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज क्रिएट हेनी। तो ओबियसली जी आप देखिए अर्बन रे अच्छी सेमती से ही रे, प्लस रूरल रे जी आप एंगेज अच्छा एग्रीकल्चर सी भी सेमती एंगेज होकर रे। सो वी नीड टू डाइवर्सिफाए। आपन गोटे इकोनॉमिस्ट अच्छा लुइस, ओके, आर्थर लुइस। से आर्थर लुइस कौन कहती कि आपणकर सस्टेनेबिलिटी आपन को जो सरप्लस एग्रीकल्चर या सरप्लस लेबर फोर्स एग्रीकल्चर अच्छा आपन को डाइवर्ट करार अच्छे कौ जगह को, मैन्युफैक्चरिंग को एज वेल एज द सर्विसेज सेक्टर को। जदि आप डाइवर्ट करेंगे ना, डेफिनेटली सेमती आपंकर लेबर सरप्लस एग्रीकल्चर रो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सेमती प्रिवेल कर। सो ये जो डाइवर्जन हो पार फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और द सर्विसेज सेक्टर, दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू दिस व्हाट वी कॉल urbanization फल। तेणु urbanization is required, but obviously we need smart cities obviously, okay, smart way रे sustainable manner रे urbanization को grow करिवार अछि। Urbanization does not mean blindly we will start it, okay, but urbanization is required, urbanization is must, because they are engine of growth। They will absorb the surplus labor force from the agriculture, they will create more such job opportunities, so they will increase the sources of income of the people। so ये सब जिनस, and definitely they will lead to better standard of living by this urban areas। so प्रथम implication कौन होची, even if we have more urban areas, but आज भी से गुड़िक पंचायत राज institutions under रे रोची। so first of all, settlements remain under panchayat raj limited to the critically designed welfare schemes। तेणु जो गुड़िक रूरल एरिया जो वेलफेयर स्कीम्स गुड़िक रोचे से या केवल रूरल एरिया रे ही से गुड़िक लिमिट रोचे।
अर्बन एरिया से आसुना अर्बन बेनिफिट से मिल पारना डिनाइड एक्सेस टू अर्बन लोकल बॉडीज लेवल ऑटोनॉमी फाइनेंस एंड प्लानिंग पावर्स जदि आप अर्बन एरियाज को देखिए एंड रूरल एरियाज को कंपेयर करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन notified area council and the municipal council they're not getting that much amount of money or good amount of money if you compare with them with the panchayat raj institutions, right? Panchayat raj institutions are better jodi apan kohibe in terms of finance and autonomy in comparison to the municipal council and in terms of notified area council. That's true. That's true. Sethipai to kuhajaଉଛି cities slum ପାଇଁ we can't stop making cities. Slum ପାଇଁ we cannot stop making urban areas. We cannot stop with respect to the urbanization. But obviously metro cities रे जेहेतु slums गुड़िक अच्छी ताको आमे मैनेज करबा कोड सित आपण देखिबे प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम रे लो इनकम ग्रुप को आमे फ्लैट्स गुड़िक सरकार वर्तमान बिल्ड करिकी दउचंदी कोन पाई बिकॉज ऑफ दिस to reduce the slums in the cities जो गुड़िक actually congestion unhygiene ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करूचन. Now planning and infrastructure misclassified settlements poor allocation of funds weak service delivery ये आपनकर planning and infrastructure रो प्रॉब्लम पाई देखिबा को मिलुची funds ठीक से मिलुनी and weak service delivery in terms of water sanitation transportation housing ये प्रॉब्लम भी अछि. Democracy and representation people living urban lives lack elected urban governance. Okay, तेणु urban life तो जीउचंदी बट सेठी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आज भी चली पंचायत अंडर से एरिया टी आसुची तेणु अर्बन गवर्नेंस रो जो आपनकर तांकर जो फैसिलिटीज मिलबा कथा से मिल पारु नाही. इकोनॉमिक डायमेंशन सेमते देखिबे अंडर एस्टिमेशन ऑफ द अर्बन वर्कफोर्स पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री हाउसिंग नॉट एविडेंस बेस्ड जेहेतु सेठी आपणकर अर्बानाइजेशन नाही तेणु अर्बानाइजेशन पाई जो टाइप रो पॉलिसी आसीबा कथा अर्बानाइजेशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसीडर होबा कथा आपण देखंतु गोटे एरिया पंचायत रे आसुची आ गोटे एरिया गोटे म्युनिसिपल काउंसिल रे आसुची सिंपली देखिबे से एरिया रे जो रियल एस्टेट भी अछि रियल एस्टेट आपणकर प्राइस अधिका को केस रे होबो डेफिनेटली जोटा म्युनिसिपल काउंसिल रे आसीबो या जोटा आपणकर नगर पंचायत रे आसीबो तो ये होची सिस्टम. सो वंस यू मेक एंटर टू दोज एरियाज अंडर द अर्बन गवर्नेंस डेफिनेटली पॉलिसीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री हाउसिंग ये डेफिनेटली आपनकर इंक्रीज हो. डेटा फॉर एसडीजीज एंड पॉलिसी मिस क्लासिफिकेशन अफेक्ट्स ट्रैकिंग ऑफ एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज स्मार्ट सिटीज मिशन अमृत अर्बन पॉवर्टी एंड माइग्रेशन स्टडीज तेणु जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रो टार्गेट्स गुड़िक अच्छी एंड पॉलिसीज गुड़िक अच्छी से जगह आप देखिए ये एसडीजी 11 आमर कौन कौन सस्टेनेबल सिटी फॉर्म करने. एनीवे चैलेंजेस या आम देखिले बट वे फॉरवर्ड कौन अच्छे देखो रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी डेफिनेशन ऑफ द अर्बन एरिया एज पर द सेंसस एंड मेल वर्कफोर्स को ही गोटे क्राइटेरिया वी कांट फिक्स. We have to look into the female workforce criteria as well. Incorporate women work and gig economy in classification. Introduce in between categories that is peri-urban and transitional town. ये भी गोटे category we can define. Periodic updating municipalization of census towns should not lag for decades. आम गोटे 10 वर्ष वेट करवा सेमती नुहे जमी executive decision सरकार नौचंदी that can be done. Global learning many countries use functional urban areas based on commuting patterns, economic linkages and not just administrative notifications. Okay, तेणु ग्लोबल लर्निंग रो भी हमको शिखिबार अछि. नेक्स्ट रेमिटांसेस देखिबा आउटवर्ड रेमिटांसेस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम dips 11% in July to $2,452.93 million. इटा टिके टेक्निकल आपण कहबी जो आपनकर एक्सटर्नल सेक्टर अच्छी ता सहित रिलेटेड जो मैंने आमर फाउंडेशन बैच रे अच्छी से मैंने डिस्कस आम करूँ आप जानी. लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम कौन देखो लॉन्च्ड इन February 4, 2004 लॉन्च्ड इन February 4, 2004. इनिशियल लिमिट केते अच्छे देखो 25,000 पर फाइनेंशियल ईयर ये हूँ इनिशियल लिमिट.
बट ताको बढ़ा जाइए बर्तन करा 2,50,000 पर रेसिडेंट इंडिविजुअल पर फाइनेंशियल ईयर। एलिजिबिलिटी कौन अवेलेबल टू ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, not available to corporates, partnership firms, trust and HUPs, etc. So basically ये जो liberalized remittance scheme कौन देखो remittance प्रथम कौन remittance होची आपनकर suppose people are staying abroad, they are sending back money to their family members in India, that is the inward remittances. Simply सेटा को अपना उल्टा कर दियंतु, the people are staying in India, they are sending back money to their families in the foreign countries, that is outward remittances. So outward remittances यदि आपनकर increase हबो, that means demand for dollar will be increased. When demand for dollar will be increased, the price of dollar will increase in comparison to the rupee, Indian currency. So Indian rupee will be depreciated and the dollar value will be appreciated. तेणु ये जिनस जेहेतु चली तेणु सरकार गोटे रेस्ट्रिक्शंस लगे ना, रेमिटान्सेस इज द पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट। जमी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए गोटे हूँ करंट अकाउंट गोटे हूँ कैपिटल अकाउंट। सो रेमिटान्सेस कम्स अंडर द करंट अकाउंट। सो ताऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा जाइए कि पर रेसिडेंट इंडिविजुअल पर फाइनेंशियल ईयर याठू अधिका से रेमिटान्सेस सेंड करें ना। सो 2,50,000 पर रेसिडेंट, कारण ताठू जदि अधिका से मैंने सेंड करती दैट मीन्स दे विल डिमांड मोर डॉलर एंड इन रूपी प्राइस विल डिप्रिशिएटेड। Available to all resident individuals including minors. Okay, now moving to the next. Purpose कौन देखो कौन पे सेंड करा जाउची कि ट्रैवल पे जाउची कि स्टडीज अब्रोड, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डेब्ट, म्यूचुअल फंड्स, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, deposits with banks, financial institutions abroad. So any such point, the money is simply flowing from India to other countries. तो आमर रिस्क जो आप देखिए डॉलर अगेंस्ट रूपी जो धीरे धीरे कमी कमी जाऊँगी, दैट मीन्स डेप्रिशिएट ही जाऊँगी एंड हाईएस्ट डेप्रिशिएटेड अमाउंट आम देखुचे रिसेंटली या लोएस्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन आम कहूँ इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन टू डॉलर ये पॉसिबल होची यही सब जिनस। तो डॉलर अप्रिशिएट होची, रूपी कहीं डेप्रिशिएट होची, जमती आम देखीचे डिमांड फॉर डॉलर जदि इनक्रीज हम आम कंट्री तेज ये भी गोटे फैक्टर। तो से why government is putting restrictions on that, so that not so much money would go outside from India to अपना कोई परिवे abroad. So implication देखो तो travel and education tip could reflect global economic slowdown, visa issue, rupee depreciation and cost pressure abroad. Okay, तो ये गोटे जिनस जो कि आपणकर रेमिटान्सेस होची, बट जेहेतु आम रेस्ट्रिक्शंस लगाऊे तो डेफिनेटली ट्रैवल एंड एजुकेशन डिप या ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन आसी पारे, ये कमी पारे। दैट मीन्स लेसन नंबर ऑफ ट्रैवल पीपल और लेसन नंबर ऑफ टूरिस्ट वुड गो फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, लेसन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड गो। ओके, ये जिनस प्लस आमर रूपी डिप्रिशिएशन भी कंट्रोल हो पार। राइज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेमिटान्सेस सजेस्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेसिडेंट सेविंग्स, हेजिंग अगेंस्ट रूपी वीकनेस एंड ग्लोबल एसेट अपॉर्चुनिटीज। ये जो राइज इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेमिटान्सेस आम भी किसी दिन पूर्व देखी नेट एफडीआई हैज इनक्रीज्ड, दैट मीन्स जी एफडीआई आम कंट्री को आसूची सेठू एफडीआई अधिका आम कंट्री बाहर को जाऊँगी। सो दैट ऑल्सो लीड्स टू डेप्रिशिएशन ऑफ द इंडियन रूपी। फॉरेक्स मैनेजमेंट इंपोर्टेंट फॉर आरबीआई सिंस एलआरएस आउटफ्लोज अफेक्ट बीओपी एंड फॉरेक्स रिजर्व्स। ये जिनस मुझे ऑलरेडी कही दिस इज इंपोर्टेंट फॉर आरबीआई कारण यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी अफेक्ट करुँच, अधिका फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन होची, रूपी डिप्रिशिएट करुँच। पॉलिसी बैलेंस आरबीआई एडजस्ट लिमिट्स ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेक्स स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये भी गोटे जिनस आरबीआई कौन करुँच करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करुँच, तापरे लिमिट इम्पोज करुँच विथ रेस्पेक्ट टू फॉरेक्स स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, दैट मीन्स रूपी एंड डॉलर एक्सचेंज वैल्यू प्लस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। कारण रूपी आपंकर जिते डेप्रिशिएट हो आपड़ जिते इंपोर्ट अधिका करूँगी, दैट मीन्स यू विल इंपोर्ट द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एट ए हायर प्राइस, जोटा कि आपण डोमेस्टिक कंट्री रे इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन देखा मिले। माओइस्ट रिसेटलमेंट को लेकिन कहुच्छे देखो ब्रिंग बैक ट्राइबल्स हु फ्लेड माओइस्ट कन्फ्लिक्ट, एससी एनसी एसटी और माओइस्ट रिसेटलमेंट हो या माओइस्ट अफेक्टेड पीपल मानकर रिसेटलमेंट हो देखा।
Around 2005, heavy conflict between the Maoist and security forces in Chhattisgarh's Bastar and adjoining regions led to the displacement of the several scheduled tribe families. That means these tribal people are living in those areas, whether they are directly or indirectly associated with the Maoist. Kichi achandi, they are considered as the sympathizer to the Maoist. Okay, तो एमाने जो माने डिस्प्लेस होइचंदी जो माओइस्ट अफेक्टेड पीपल सेमानंको रीसेटलमेंट करबा पई कोआ जाउची एंड मेनी सच माइग्रेटेड पीपल टू तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, particularly from this Bastar district. Once it was considered as the hotspot of the Maoist ideology, but now it's completely free from the Maoism. NCST intervention देखिए September 2025, NCST urged Chhattisgarh government plus Union Ministry, Home Affairs and Tribal Affairs to frame a dedicated policy plan for the displaced ST families. Okay. Similarly, provide land with respect to equal or more than 5 acres, housing facilities tango provide karibako padibo, employment, ration, community certificate so that they would live a decent life. Ensure basic infrastructure, primary schools, Anganwadi, health center, electricity and water. These are again the primary or basic requirement which are needed for the rehabilitation and resettlement of these Maoist affected people. Why it is important? First of all, the tribal rights, restoring land, the forest resources, their identity, okay, under the 5th schedule safeguard, okay. Governance issue, it shows a gap between the center, state and interstate coordination, so we need to address that. Conflict displacement, so जे displace ହେଇଛି, obviously resentment among these people, so that can lead to internal conflict or internal security conflicts. So better before that, let's resettle or rehabilitate them. Policy gap, no comprehensive national policy on internal displacement, unlike refugee policy. जो अलगा देशरू जो आसुचंदी तांको ପାଇଁ policy अछि, but we do not have any internal policy for the internal displacement. Constitutional role, NCST under Article 338A can advise, recommend policy, investigate matters related to ST welfare. Okay, so these are the significance of this step. Next, FCRA, I think you must have seen Lehre apankaro violence ହେଇଛି, and Sonam Wangchuk, the leader of that area, Ladakh region, he was considered as the provoked the Genjis to adopt this violation or the violence in fact. So case frame करा जाइए, and plus तांकर जो organization अच्छी NGOs अच्छी ता ऊपरे FCRA license को cancel करा जाइए, and as per that law, so chances अच्छी तांको arrest मध्य करा जाइए. So let's see what is this FCRA. Students Educational and Cultural Movement of Ladakh, ये होची तांकर organization और ना. फाउंडर के सोनम वांगचुक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, एजुकेशन रिफॉर्मर, इंजीनियर, जहाँ के ऊपर आपनकर 3 Idiots मूवी हितला. Action, Union Home Ministry cancelled its FCRA registration, citing violations. Parallel inquiry, CBI proving FCRA violation by another Wangchuk-linked NGO, Himalayan Institute of Alternative Ladakh, which lacks FCRA clearance. Okay, so these are the cases which immediately started against him after this violence. Now, what is this FCRA? FCRA was started in 1976 to regulate foreign donation to individuals, associations and NGOs. Ideally considered Foreign Contribution Regulation Act. I mean FCRA को कौन कहूचे? Foreign Contribution Regulation Act. And through this, NGOs are controlled, or NGOs ऊपरे आपनकर जो कोने निगरानी रखा जाए, and they are in the scrutiny, because the foreign fundings must not be used against the interest of the country, must not be used against the national security. So as per the FCRA, the NGO's contribution from the foreign land is controlled. So replaced by the FCRA 2010, more comprehensive control further tightened as per the 2020 Act, COVID time rastala. To prevent foreign contributions from being misused in activities
detrimental to national interest, sovereignty and security. Provision गुड़िक देखो, registration and prior permission, must register with the Ministry of Home Affairs under FCRA to receive foreign funds. Validity is 5 years and again will be renewable under the scrutiny. One time prior permission for specific donation. Okay, the specific donation by गोटी आपनो permission नेबे. Designated bank account, all FCRA funds must be received only in the designated account at SBI New Delhi main branch, separate from domestic donations. Okay, तो foreign funding ऊपर ही control करा जाउची, not on the domestic donation. NGO, civil society, जहाँ भी अपन कोई परिवे. Prohibited recipients. Foreign contributions are banned for election candidates, political parties, judges, government servants, journalists, state-run media, organizations of political nature. Okay, use of funds must be used strictly for the stated objective of the NGO. तो जो NGO टी open ହେଇଛି, that fund must be used for that purpose. Administrative expense is capped at 20%. ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ସବୁତକ ଆମେ administrative ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ purpose ଥିଲା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ନାଇଁ, that is not the case. କାରଣ ଆପଣ fund को divert କରିଥିବେ, so misappropriate କରିଥିବେ and you are simply giving ଆମେ ସବୁତକ administrative use କରିଦେଲୁ. तो पोस्ट 2020 अमेंडमेंट रे इटा 20% करा जाइए, जोटा कि अर्लियर केते थिला 50%. रिपोर्टिंग एनुअल रिटर्न्स टू द MHA डिटेलिंग इनफ्लो एंड यूसेज, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आपण रेगुलर रिपोर्ट आपण देबे. 2020 रे कोन चेंजेस आसला देखंतु. बैन एंड सब ग्रांटिंग. रजिस्टर्ड NGOs कैन नो लॉन्गर ट्रांसफर फॉरेन फंड्स टू अदर NGOs. तेणु गोटे NGO पाखक आसला एंड देन से ताको आउट NGO को ट्रांसफर करूची, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. Second, administrative cap has been kept under 20%. Mandatory Aadhaar for office bearers of NGOs, exclusive SBI account Delhi for receiving foreign contribution. केवल SBI account Delhi रे ही आपण पाई परिबे. Rationale देखंतु, prevent foreign influence in Indian politics, media, academia, activism. Ensure funds are not misused for activities against sovereignty and integrity of India. एग्जाम्पल कौन आप देखो, जमती आप देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड देयर आर NGO जो मैंने कि स्ट्राइक करूँ, प्रोटेस्ट करूँ ऑन द नेम ऑफ लेट्स से ह्यूमन राइट्स. जो कश्मीर रे जो वायलेंस गुड़िक होता बाय द मिलिटरी फोर्सेस ता अगेंस्ट भी कह जाऊला दिस वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल. एंड गवर्नमेंट कौन करूला विथ रेस्पेक्ट टू द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आम कश्मीर रे मिलिटरी डिप्लॉय करूँ. तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी जिनस गुड़िक ही कंट्रोल करने कहुँ से गुड़िक इश्यू होता आम इंटरनेशनल मीडिया रे, जो कि गवर्नमेंट को ब्लेम करुले. इंटरनेशनल मीडिया रे, इंटरनेशनल फोरम रे गवर्नमेंट को ब्लेम करा जाउतला. तो से कहगला कि एगेंस्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एगेंस्ट जमती यूज न हो, नेशनल सिक्योरिटी मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. इश्यूज एंड क्रिटिसिज्म. ओवर रेगुलेटिंग एंड चिलिंग इफेक्ट. जो मैंने एनवायरमेंटल माइनॉरिटी एडवोकेसी राइट बेस्ड NGOs अच्छा से स्पेस को आप स्क्वीज कर देइछन. ओके, से माने कोनोसी एक्टिविज्म करि परिबे नाही एंड प्रोवाइडेड से माने जदि कोनोसी फॉरेन फंडिंग पाउछन तंग ऊपर कंप्लीटली स्क्रूटिनी रहिबो. आर्बिट्ररी इन इम्प्लीमेंटेशन कह जाउछि कि दिस इज ओनली फॉर द पॉलिटिकल नेचर and perception of targeting NGOs critical of the government policy. जी गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कला ताकू टार्गेट करा जाउछि. इन द ग्रीन पीस एमनेस्टी, ग्रीन पीस अबाउट द और रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल एंड एमनेस्टी अबाउट द फॉरेन फंडामेंटल राइट्स. इम्पैक्ट ऑन द ग्रास रूट. सब ग्रांटिंग बैन हिट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द लार्जर NGOs. एंड ट्रांसपेरेंसी वर्सेस हरासमेंट. While misuse exists, blanket tightening can affect NGOs engaged in the development, relief, education and health. समस्त को गोटिए basket रे we can't keep because there are NGOs those are actually involved in the developmental work as well. Right? Odisha related देखिबा PSCs, Primary Agricultural Credit Societies. Odisha draft cooperative policy 2025. Odisha government released the first cooperative policy 2025 aiming to transfer the cooperative sector into inclusive sustainable people's movement and achieve the vision of Viksit Odisha by 2036. Okay,
तो कोऑपरेटिव पॉलिसी स्पेशली फ्रेम करा जाइछि टू मेक द an inclusive development inclusive sustainable people's movement and target करा जाइछि विकसित ओडिशा by 2036 फीचर्स गुड़िक देखो यूनिवर्सल कवरेज PHCs primary agricultural credit societies will cover all those 6,794 panchayats, central cooperative banks in all 30 districts, model cooperative ecosystem 30 model cooperative villages, one in each district, sectoral cooperative cluster that is millets, pulses, dairy, fishery, coffee, handicraft, spices by 2036, education and research सेठी भी आपनकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज गुड़िक रहिबो तेणु यूनिवर्सल कवरेज एजुकेशन आपनकर जो एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन के जो मिलेट पल्सेस डेयरी ये सब जगह कोऑपरेटिव ऑपरेट करिवो एंड आपण जानिथिबे जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज गुड़िक अछि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज अछि आपनकर पंचायत रो विलेज लेवल रे आपनकर आ गुटे अछि आपनकर डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जोटा अछि ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट से कहूची एंड आउ गोटे हूँ आपंकर स्टेट लेवल रे तो यहाँ कौन सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ये हूँ आपंकर प्राइमरी प्लस आउ गोटे स्टेट लेवल रे 3 टियर स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव रे देखा मिल आपंकर एवं एमान फंडिंग किए दब नाबार्ड दिए फंडिंग डिजिटल एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिशा कोऑपरेटिव डिजिटल स्टैक इंटीग्रेटेड विद द नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस with respect to the infrastructural data and all, state level cooperative data center analytics reporting decision making etc, financial support state cooperative revival and restructuring fund এবং ये fund अपन करो financial assistance कोठो आनिबा नाबार्ड and other sources, market linkage branding state level cooperative smart tie-ups with the Flipkart Amazon ONDC that means जो अपन करो cooperative societies गुडी को अछंती सेमानकर प्रोडक्ट को हाईलाइट करा जीवो नेशनल जो मार्केट प्लेस रे ई मार्केट प्लेस रे उत्कल ब्रांड और कलिंग ब्रांड ये कोऑपरेटिव प्रोडक्ट्स रो ना रहिबो एंड कॉफी स्पाइसेस मराइन प्रोडक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड मार्ट ई कॉमर्स पोर्टल रे भी इंक्लूड करा जीवो सो सैटेलाइट सेंटर गोटे डिजाइन करा जीवो नेशनल त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी एंड रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टुड बी अपग्रेडेड ओके एमसीक्यूज देखिबो Consider the following statement regarding artificial rain in India. Generally involves dispersing substances like silver iodide, sodium chloride into clouds. Cloud seeding has been used in India only for drought management, never for the pollution control. And the third would be IIT Kanpur and Delhi government have collaborated on this artificial rain experiment. Kona answer? এটা তো হবনি আপনার ক্লাউড সিডিং এটা হবনি এটাকে ছাড় দেবে তো আপনার কোণ হব 1 and फर्स्ट स्टेटमेंट এইটা फर्स्ट स्टेटमेंट एंड 3 এটা 1 2 3 4 হয়ে যাইছি सो फर्स्ट एंड थर्ड 1 and 3 হব आंसर আপনার यस ओके नेक्स्ट with reference to urbanization the portion of India's urban population below global average the United Nations objects India is to have the largest urban population in the world by 2050. Urban flooding is primarily caused by river overflow and is little linked to the unplanned urban growth. तो थर्ड को हटी दियंतु again आपनकर 1 and 2. Under liberalized remittances scheme, recent individuals can remit up to 2,50,000 per financial year US dollar. Overseas education, medical treatment, purchase of property abroad are permitted under the scheme. LRS allow investment in foreign lottery or sweepstakes with RBI approval. इटा भी आपनकर 1 and 2 लॉटरी पाई फॉरेन लॉटरी पाई अलाउ करा जो नहीं ओके जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम रे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब रिसेंटली एडवाइज छत्तीसगढ़ टू अडॉप्ट रिहैबिलिटेशन प्लान 2018 Bruce Resettlement Plan. Recommendation include minimum 5 acres of land, PMAY housing, ration community certificates, minimum infrastructure like school, healthcare and habitation. All
restricted or prohibited under FCRA use of foreign contribution for activities affecting national sovereignty, political parties receiving donation from foreign companies, depositing domestic local funds into FCRA bank accounts. Depositing domestic local funds into FCRA bank accounts. तो ओबियसली नुहे डोमेस्टिक लोकल फंड उपर कौन कंट्रोल ना केवल कंट्रोल अच्छी आपंकर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्टिविटीज अफेक्टिंग नेशनल सोवरेनिटी, पॉलिटिकल पार्टीज रिसीविंग डोनेशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज या पर भी रेस्ट्रिक्शन अच्छी। तो 1 and 2 आपण कहीपर 1 and 2 थर्ड उपर कंट्रोल ना, थर्ड उपर कंट्रोल अच्छी। FCRA केवल फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कंट्रोल करुच्ची। Consider the following with reference to primary agricultural credit societies. Lowest tier of the short-term cooperative credit structure. Provide only credit, do not undertake activities like procurement or distribution of inputs. Recent government initiative aims to computerize all PACS for better transparency. Lowest short-term credit, yes. Procurement and distribution of inputs. इटा आपनकर प्रोक्योरमेंट से जदिव कैनि बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स करे जमती सीड्स दवा, ओके, मशीन दवा, ये सब जिनस करे। तो सेकेंड को आप रॉन्ग कहीपर एंड 1 and 3 कहीपर आप करेक्ट। अचीवर सीरीज आमर चली जोटा आपंकर क्रैश कोर्स आप चाहिए जॉइन करेंगे। आरंभ बैच 10.0 आपंकर ऑलरेडी जदि आप चाहते जॉइन करने ये हूँ लोएस्ट प्राइस एवर। गोल्ड हूँ 8,999 प्लाटिनम हूँ 15,999। कोड यूज करेंगे JN लाइफ, ओके। सेल आपंकर एंड हूँ 30th सेप्टेम्बर। बाकी ये हूँ आपंकर टेलीग्राम चैनल आप स्कैन करके जॉइन करेंगे सो दैट यू विल गेट द PDF, ओके। थैंक यू।